Ankana was 1 minute past her scheduled time. So yeah. Next would be Jaswinder. Hi Jaswinder. Hello, ma'am. Good afternoon. की हाल चाल? Okay, आप बताओ. बढ़िया, चलो शुरू करिए. Yes, ma'am. My name is Jaswinder Kaur. I am from Ludhiana, Punjab. मेरी hobbies हैं cooking and sports वगैरह. और मुझे म्यूजिक, डांस एक्सेट्रा सब कुछ पसंद है, ट्रैवल करना. देन उसके बाद मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैंने खुद का मेकअप किया, सेल्फ मेकअप. एंड देन मैं अपने कुछ ब्रशेस दिखाना चाहती हूँ जिनसे मैं मेकअप करती हूँ. तो सी दिस, ये मेरे ब्रश हैं जिनसे मैंने मेकअप किया है. और मुझे नेल आर्ट का भी शौक है, तो मैंने नेल प्लेट भी बनाई है आज. तो सी दिस. ओके, थैंक यू. Thank you so much, Jaswinder. Thank you so much. Okay. So moving ahead, we have the sequences Arushi, Aishwarya, Vaishali, Swati, Anuja, and Tanya. So next would be Arushi. Arushi, can I please hear from you? Yes, Harry. I hope I'm audible. Yes, you're audible, Arushi. Are we ready? Yeah. Yes. Go ahead. Start? Yeah. Yeah. So, very good afternoon to the judges and all the beautiful ladies. This is Arushi. I come from City of Temples, Amravati. Currently, I'm pursuing final year of my graduation in Bachelor of Management Studies from Mumbai University. My hobbies include public speaking, reading, and basketball. I have been the state level player at basketball competitions and national and state levels. I have been awarded as a awardee. Hello. Okay, so I've been awarded as the best orator at elocution competitions as well. I come from a family of doctors. My mom, dad, my brother, all are doctors. So it was difficult for me to step out of a comfort zone. But I have always believed in an idea that either find your way or make one. So since my college, I've been participating in beauty pageants. But Forever Miss India is a platform which is big in itself. It gives opportunities to young ladies to showcase their talent. I believe that everybody over here is aiming for that crown, for that pageant. Same me, but the experience, the learnings, the skills which we are going to gain over here in the entire process is what I'll cherish for my entire life. So I guess that pretty much sums up about me, and thank you so much. Thank you so much, Arushi. Thank you. So next would be Aishwarya. Hi, Aishwarya. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, you're audible. Are we ready? Yeah. Okay. So, thank you so much. Good afternoon, everyone. And how are you all? Actually, my name is Aishwarya. I'm from Navi Mumbai. I completed my graduation. I pursued my graduation from MGM, and I'm a chemical engineer. Then I am a model. I work as a model for 2-3 modeling industries, and I work for lots of advertisements also. And I'm a classical singer, as you all know. In the first interview, I told ma'am also. Yeah, so that's it about me. So I will sing one song for you all, and yeah. So तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं. Yeah, so that's it. Okay, thank you. Thank you so much, Aishwarya. So the next sequence would be next in line. Jury members, are we good to proceed? Thank you. So Vaishali. Hi, Vaishali. Hello, ma'am. Vaishali ji, are we ready? हाँ मैम, रेडी. गुड आफ्टरनून. मेरा नाम वैशाली पांडावद्रा है. मैं गुजरात जामनगर से हूँ. मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ. मुझे नाइट ट्रैवलिंग, न्यू डिशेस ट्राई करना और म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है. मुझे एक्टिंग और मॉडलिंग में इंटरेस्ट है. थैंक यू.
Thank you, Vaishali. Thank you so much. So next would be Swati. Vaishali, आप please अपने आप को mute कर लीजिए. Thank you. Swati ji, can I please hear from you? Yeah. Good afternoon. Are we ready? Yeah. Okay. Not nervous, na? No. Okay, go ahead. Good afternoon, everyone. Good afternoon, judges. मानूंगी ना हार, मुझे है फतेह का जुनून. एक नक्षत्र, एक प्रभावशाली स्टार, स्वाति. My name is स्वाति भार्गव. मैं नवाबों के शहर लखनऊ से हूँ. FSIA ने मुझे सुनहरा अवसर दिया है चमकने का. I am domestic engineer and businesswoman. I fix everything in the house. That's why I call myself domestic engineer. Creativity is in my genes. लाइफ एक मौका खुद को प्रूव करने का अवश्य देगी और मैं उसे अपनी कड़ी मेहनत से जरूर अचीव करूंगी. ये मेरा बिलीव है. सबकी लाइफ का एक पर्पस होता है, मेरा भी है. मैं लेडीज एंड गर्ल्स जो आगे बढ़ना तो चाहती हैं बट नहीं बढ़ पाती हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने, उनके सपने पूरे करने में उनकी हेल्प करना चाहती हूँ. इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगी. थैंक यू. मैं क्रिएटिविटी, कुछ फैशन एसेसरीज शो करना चाहती हूँ. क्या मैं शो कर सकती हूँ? थैंक यू. ये डोरी से मैंने नॉट बांध के एक वॉल हैंगिंग तैयार किया है. इसे मैक्रमी कहते हैं. इसी पैटर्न पे बहुत सारी चीजें बनती हैं. ये इयररिंग तैयार किया है और इसे ऐसे नॉट बांध के थ्रेड से बनने के बाद तो ऐसा लुक आता है. ये मैंने नेट से इयररिंग्स बनाई है, जो ट्रायंगल ऐसे नेट के क्लोथ से ये डायमंड शेप में इयररिंग बनाई. एंड ये नेकलेस सेट है डेनिम का, जीन्स जो हम पहनते हैं उसकी इयररिंग्स एंड नेकलेस पहन के बहुत सुंदर लगता है. थैंक यू. Thank you so much, Swati. Thank you. So next would be Aarti. Oh, sorry. I'm really sorry. Next would be Anuja. Hi, Anuja. Can we hear from you, please? Okay. Hello, everyone. Am I audible? Yes, you're audible. Are we ready? Yes. Okay. Go ahead. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to introduce myself here. I am Anuja Rahane. I am from Amravati, Maharashtra. I am civil engineer by profession and I am pursuing my MTech from COAP, College of Engineering, Pune. And my hobbies are dancing and painting. I love to dance. In my college days also, I love to participate in many competitions like dancing and arts and crafts and paintings. I also won some prizes in that. And I am a state level player in roller skating, and also I played for national. And I am that type of girl which believes on hard work. Until now I do lots of hard work, and that's why I believe on hard work. That's my belief. I would like to show my paintings. This is the acrylic painting of mine. This is also one painting of mine. This is the scene. Okay. And this is also the acrylic painting of mine. That's all. Thank you, Anuja. Thank you so much. Next we have is Tanya, and post Tanya the sequence would be Naina, Gayatri, Pratibha, Kalyani, Supriya, Anupam. So Tanya, can I please hear something from you? Hello, ma'am. How are you? I am good. Thank you for asking. Are we ready? Yes, ma'am.
Go ahead. Hello everyone, my name is Tanya Makhija. I am from Indore, Madhya Pradesh. Currently, I am pursuing computer science and I am also a basketball player, state level basketball player. Here are my some medals, trophies, and certificates. I also like to dance. I am very foodie. वो खाना खाना बहुत पसंद है, खाना बनाना भी बहुत पसंद है और मम्मी के हाथ का राजमा चावल तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है. सो और मेरा FSI को मैं थैंक यू बोलती हूँ, उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी क्योंकि लाइक मेरे को बहुत हेल्थ इशू है. जैसे मैंने मैम को पहले भी बताया था कि मेरे को क्रॉनिक किडनी डिसीज है, तो जिस वजह से लाइक एक बैरियर आ जाता है, अपन नहीं आगे कर पाते अपनी हेल्थ इशू की वजह से. बट मैं उसको बीच में बिल्कुल भी नहीं लाऊंगी और इस प्लेटफॉर्म की वजह से आई वुड लाइक टू सबको मतलब बताना चाहूंगी कि यही एक आपकी जिंदगी नहीं रह जाती है. इसके आगे अगर आपके मन में सच्चाई है उस पैशन के प्रति तो आप डेफिनेटली उसको हासिल कर सकते हो. सो बस अभी मैं डायलिसिस से जस्ट आई हूँ, थोड़ा तैयार हुई थी और टचअप किया था. मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, बस डांस से छोटा सा कहना शो. Thank you, Tanya. Thank you. So moving ahead, we have Naina next. Hi, Naina. हेलो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताएं. बस ठीक हो. नमस्ते. नमस्ते. Are we ready? यस मैम. Go ahead. माई सेल्फ नैना बसरानी. मैं एक छोटी सी गांव से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे कपड़े पहनना, कपड़े जीन्स वगैरह ये सब चीजें काफी अलाउड नहीं है. पेशे से मैं टीचर हूँ और टीचिंग फील्ड में मैंने काफी सारी चीजें यहाँ पर अचीव की है. मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ. ये मुझे ट्रॉफी मिली है फॉर एज एन बेस्ट टीचर इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी और ये मेरे सर्टिफिकेट है. ये भी मुझे अभी मिला है एज एन एशियन एजुकेशन अवार्ड इन द बेस्ट फील्ड टीचिंग. और ये मेरे कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे कोडिंग चैलेंज. मुझे कोडिंग वगैरह करना बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मेरे सर्टिफिकेट्स हैं. माइक्रोसॉफ्ट से मुझे सर्टिफिकेट भी यहाँ पर इशू किया गया है. उसके अलावा साइंस फेयर भी मैंने काफी जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफिकेट है जो मैंने अचीव किया है. देन ये मेरा यूडीमी में से सर्टिफिकेट है, ये भी मैंने यहाँ पर अचीव किया है. ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स मुझे एज एन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मिली गई है. और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पे डांस एक्चुअली पूरा नहीं आता, बट थोड़ा बहुत एज एन एक्स्ट्रा एक्सप्रेस फॉर्मेशन में मुझे आता है. सो मैं करके दिखाऊं. ओके. आवाज आ रही है आपको?
Thank you. Thank you so much, Naina. Thank you. Thank you, ma'am. So, हिमाद्री जी डोंट वरी, आपका नाम है लिस्ट में, अभी आगे बहुत लंबी लिस्ट है, ठीक है? मैं बस 5-5 करके सीक्वेंस ले रही हूँ, सो डोंट वरी, आपका नाम भी आ जाएगा. Okay, next we have is Gayatri. I guess she has gotten disconnected. So moving forward, next we have is Pratibha ji. Hi Pratibha. Hello ma'am. Am I audible ma'am? Yes, you're audible. Are we ready? Yes ma'am. Go ahead. सवाल ये नहीं रफ्तार किसकी कितनी है, सवाल ये है सलीके से कौन चलता है. Very good afternoon, honorable jury members. Poet at the heart, educationist from the mind, born in family of academicians and married to a defense personnel. Myself, Dr. Pratibha Singh from Mumbai at the platform of FSIA 2021. Compassionate, enthusiastic, easygoing but analytical, photophile and conservationist. I have done doctorate in environmental sciences and currently working as a teacher. Life is not a problem to be sorted out, but a reality to be experienced. And I want to preserve this alluring journey of life with magnificent milestones. And this platform is going to be one of that landmark. We are not the same as earlier, and we won't be the same person in near future. So I'm here to acquire the best version of me. This would make me unable to encompass my voice against social issues more effectively. With this, my life would be more fulfilling, satisfying, cherishable, with more opportunities and capabilities. This is well said also. Unexamined life is not worth living. A million thanks to you. Jai Hind. Thank you so much, Pratibha. Thank you. So also, guys, for all those of you who are asking to leave, you need to understand the dynamics of being in a show which is all about community. If there is some problem, of course, you are more than free to leave. But yeah, you'll have to be there for others also. Agar aap perform kar rahe ho and somebody leaves, it's just doesn't look right? So please, and if you want to, you're more than free. You don't have to ask. Now getting to Himadri, I think she needs to perform earlier because she has some problems back home. So Himadri, Kalyani, we shall get back to you. Let me just get done with Himadri so that she can get winded up first. Himadri, please unmute yourself. Am I audible? Yes, you're audible. Please go ahead. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. My name is Himadri Singh, and I'm from Patna, the city of knowledge and leaders. As you all know, Ek Bihari Sabse Bhari. First of all, I can't stop myself from saying this, that I'm Indian, a country where we find unity in diversity. So I would like to thank FCA, Mrs. India, for providing me such a beautiful stage to prove myself in this male-dominated society. And I want to say something to the men of this society, that if you treat me like a queen, I will treat you like a king. And if you treat me like a game, then I will show how exactly it's played. And we are strong girls. We don't have attitudes, we have standards. And my basic talent is makeup, as I have already done. But today I want to give dance performance for this talent round. So can I start, ma'am? Hello. Can I start? Yes, go ahead. You don't have to ask to perform, guys. That's something that everybody should know. आपको permission लेने की ज़रूरत नहीं है.
चूड़नी सूरत मंगवाई रही सोने की करवाई गले में लटकेर के मैं चूड़नी चांदी की रूप कट निकला पाटला सिकरा बहू के आने काले तमन विच पैरी जुत्ती बड़गी देखो चीज कसुत्ती जगत पर पानी में चली 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 या फोन नहीं करूँगा मुल्क खेल फैल करे तेरे माथे हिमाद्री जी Himadri, can you hear me? जी आप म्यूट पे हो गई थी बीच में, but that's okay. Thank you so much, Himadri. Thank you. So moving forward, also Sia is facing some technical glitch at her end because of electricity issues. She's there, but just her video is off. So she's present, just to inform the participants. So next would be Kalyani, and then we move forward to Gayatri, Supriya, Anupam, Renu, and Indrani ji. Ma'am, I'm audible? Kalyani, yes, you're audible. Are we ready? Yes, yes, ma'am. Go ahead. तेरा ये जरूर नजर का कसूर क्या खबर है ये कैसा असर है तुमसे मिलने के बाद Hello everyone, I am Kalyani from Mumbai. To describe myself, I would like to describe my personality in two vertical lines. One of the verticals is my career as in profession software engineer, and second vertical which I will use is I would like to live life of my dream. So I am very much passionate about singing, dancing, and explore the world. And since these are two verticals, I would like to balance to some social activities, also some kind of self-development activities, and like this event, that the reasons I participate in the FCA podium. Thank you, ma'am. Thank you, Kalyani. Thank you so much. Can you please mute yourself? Okay, great. So also for other participant, where are your videos? आपकी audience spirit कहाँ है? आप लोगों ने videos क्यों off कर दी? It's not fair, ना? For all of them who are performing. Yeah, please keep your videos on unless you have some really important work to cover up. So next would be Gayatri. Hi, Gayatri. Okay, I guess she has lost connection again. Let me see. So moving forward would be Supriya. Hi, Supriya. Hello, am I audible?
Yes, Supriya, you're audible. Are we ready? Yes, sure, ma'am. Go ahead. The difference between who you are and what you want to be is what you do. Good afternoon, judges and one and all present here today. Hi, I'm Supriya Jain, proudly representing the land of Ganga, Haridwar. I'm a commerce postgraduate, being a teacher by profession, fashionista by passion, and a homemaker by choice. I'm a smart and hardworking woman. I'm working with the NGO since last 3 years. We provide education to the children who can't afford the price of education. My hobbies are singing, cooking, and traveling to different states with their different cultures. For me, beauty pageant is not just a word, it's a platform which always motivates me to work hard and win. I don't believe in miracles, I do only believe in hard work. Thank you. Thank you, Supriya. Thank you. Gayatri, can we finally hear from you? Are you here? Gayatri, can you hear me? Or if you could drop in a text of your potential disconnection, because I can see your audio and video connected. But yeah, there she is. अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. Hello, yeah. Can you hear me? गायत्री, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? Gayatri, is there a problem? You will have to let me know. Don't worry, Harry. We can move on. I'll ask the team to contact her. Okay. Thank you. So next would be the last set of batch. I think the most patient people, because it's very difficult to wait till the end. आपकी बारी आने की wait करने का. So we have Anupam, Renu, and Indrani next. So Anupam ji, can we please hear from you? Hello. Ji. Are we ready? Hello, can you hear me, ma'am? Yes, Yeah, I can ma'am. hear you. Okay, start. Okay, good afternoon, ma'am, and good afternoon, Preeti, ma'am. And thanks to FSI for giving me a chance to be a part of this FSI. Hello. Hello. Yes, Anupam ji, please carry on. We can hear you. Myself, Anupam Bala. I am from a small city, which is a Bokaro Steel City from Jharkhand. It is a very small town in Jharkhand. ये बहुत छोटी सी जगह है जहाँ हमें मतलब फीमेल को ऐसे कहा जाता है कि फीमेल कुछ कर नहीं सकती हैं, उनको कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने की मतलब घर में चार दीवारी के अंदर रहनी है. हम अपने सिटी से हम बहुत पहली एक ऐसी लेडी हैं जो हम प्लेटफॉर्म पे वेरी फर्स्ट टाइम फॉर मी, मेरे लिए पहला है कि मैं ब्यूटी पेजेंट में आई. और थैंक्स कहती हूँ FSI और प्रीति मैम को भी थैंक्स कहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि वुमेन जो मैरिड है उनको सबसे पहला चांस मिला है कि वो मैरिड होने के बाद वो इस एज में आने पे वो FSI में हमारे यहाँ आके और परफॉर्म कर सकती हैं. अभी तक में ऐसा प्लेटफॉर्म किसी ने नहीं दिया है. ये सबसे अच्छा परफॉर्म करने का मौका मिला है, हमको चांस मिला है जो हमने सिर्फ सबसे देखा कि हम भी बन सकते हैं. खत्म होने के बाद हमें मॉडलिंग बनने का ये मौका हम लोगों को दिया है. बहुत थैंक्स के और उसके डायरेक्टर प्रीति मैम को कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है फर्स्ट टाइम. मैं छोटे से कहती हूँ आई डॉक्टर अनुपम